हेलो स्टूडेंट्स, बहुत वेलकम इन मैथ विद एकेडमी। तो हम लोग यहाँ पर आज प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन द इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0 upon 0 एंड इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। तो बेसिकली वी विल अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल एंड देन वी सॉल्व द प्रॉब्लम। उससे पहले एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है प्रॉब्लम? Let us see. So they are asking evaluate the limit x tending to 0 tan x minus sin x upon x cube. Okay. Uh, let's write the solution of it. So if you are going to solve this limit x tending to 0, and this will be tan x minus this is sin x and divided by this is x cube. Okay. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इफ यू आर पुटिंग x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो यू विल गेट दिस इज tan 0 and minus sin 0 and divided by 0 cube into 0. It means 0 minus 0 upon 0, it means you get 0 upon 0 form. So this is the indeterminate form 0 upon 0. Okay, so we can apply the L hospital rule. What the saying the L hospital rule? कि अगर हमारे पास लिमिट है, if you are going to limit calculate x tending to a and this is your fx upon gx, and you when putting x equals to a you will get 0 upon 0 form, then its limit will be equal to x tending to a on its derivative. This is actually called DL hospital rule. Okay, so we can apply here because we get the 0 upon 0 form. Okay, so we can apply this is limit x tending to 0 and take the derivative of tan. So tan का derivative क्या होता है? It is sec square of x and cos का derivative sin का derivative क्या होता है? Cos of x. Okay, divided by it is 3x square. Okay, by you can just say by DL hospital. Method या rule you can say. अच्छा, यू कैन सी कि जब हम यहाँ पर x बराबर 0 फर्दर रखते हैं तो sec स्क्वायर इट इज 1, cos 0 इज 1 and 0, तो 1 minus 1 upon 0 you will get again 0 upon 0 form. So this is again a 0 upon 0 form. So again apply the L hospital rule. Okay, so you can, this is limit x tending to 0. Again the derivative, take the derivative of sec square x. So it will be 2 sec x, chain rule लगाएंगे and sec का क्या हो जाएगा? Sec x into tan x. And cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, तो it will be plus of sin x. Okay, divided by 3 to the 6 of x. So this is uh, again by L hospital rule. Again by L hospital rule. Okay, and you can see if you are apply here what you get. पहले आप लिख लीजिए क्या हमको मिला है. What you get, this is 2 sec square of x into tan x plus का sin x divided by 6x. Okay, if you are putting 0 you will get again 0 upon 0 form. It remains 0 upon 0 form. Further 0 upon 0 form. So again you apply the DL hospital rule. So you can again differentiate the numerator and denominator separately. So if you are differentiating this, you use the product rule. So it will be your sec square x into tan का डेरिवेटिव हो जाएगा sec square x. Okay, and plus if you are taking tan remains and take the derivative of sec square x, it will be 2 of sec x into sec का हो जाएगा, तो it will be sec x into tan x. Okay, so I'm just applying the product rule in the derivative, and derivative of cos x sin x will be equal to cos x. Okay, and this is divided by
6x मतलब x का तो डेरिवेटिव 1 होता है, तो इट विल बी इक्वल टू 6 1. Okay, now you can apply the limit. Limit. So you can have x is equals to 0. एक स्टेप में और थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं. तो इट विल बी 2, दिस इज sec की पावर 4 of x and plus this is 2 sec square x into tan square x. Okay, and plus of cos x divided by 6. Okay, so now you can put the x is equals to 0 here. अगर हम यहाँ पर x बराबर 0 पुट करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा बिकॉज tan 0 is 0. तो ये टर्म 0 हो जाएगा. दिस टर्म विल बी इक्वल टू 1 बिकॉज sec 0 की वैल्यू 1 होती है एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1. तो हमारे पास लिमिट अप्लाई करने के बाद यू विल हैव, यू कैन राइट लाइक दिस इज sec की पावर 4 0 and plus this is 2 sec square 0 into tan square 0 and it plus of this is cos 0 and divided by 6. So we can easily see this value is 2 is equals to 1 and plus this is 0 and plus of cos 0 is 1 and divided by 6. So from here you will get this is 2 plus 1 upon 6. It will be 3 by 6. It means you can say 1 by 2. So by using the DL hospital rule, we can able to calculate the limit of the indeterminate form 0 upon 0. So you can apply the DL hospital rule till you get 0 upon 0 form, 0 upon 0 form or infinity upon infinity form, because in the previous lectures we have completed, we have proved. Then when we get 0 upon 0 form, we can use this theorem, because DL hospital rule, we can take the derivative of the numerator and denominator separately. And if infinity upon infinity form, then you can also apply the DL hospital rule. Okay, so whatever you get in the form. So the limit of this implies this limit x tending to 0. This is tan x minus of sin x divided by x cube is just equal to 1 by 2. So this is your answer. Okay, there are other methods also. You can take the expansion formula. अगर हम इसको अभी तो हमने इसको डी एल हॉस्पिटल रूल से करा. अगर हमें ऐसे जनरली लिमिट कैलकुलेट करना था तो हम एक्सपेंशन का भी यूज कर सकते हैं. तुम्हारी टेक्स्ट बुक में एक्सपेंशन का यूज करके प्रूव किया गया है, मतलब रिजल्ट निकाला गया है, लिमिट निकाली गई है. यू कैन आल्सो सी दैट वन. बट if you know this rule, DL hospital rule, and the form is 0 upon 0 or infinity upon infinity, yeah, other forms if you are getting, and you can also use by the taking the derivative. It is easy to calculate. Okay, so we can also discuss the second method if you are just. So second method, we can also calculate this limit by the another method. So if you are in your textbook, they are just using the expansion, but there is no need to use the expansion because we are learning the concept of DL hospital rule. Okay, so we know the expansion of tan x and we know the expansion of sin x. So since we know that tan x is just equal to x plus 1 upon 3 x cube and plus this is 2 upon 15 x की power 5 and so on. This is expansion of tan x and we know the expansion of sin x. So you know that the expansion of sin x is what? X minus 1 upon factorial 3 x cube and this is plus 1 upon factorial 5 x power 5 and so on. Okay. So now you can use these expansions here. So this limit will be equal to, this is limit x tending to 0 and use the expansion of tan x. This will be x plus 1 upon 3 x cube
plus this is 2 upon 15 of x power 5 and so on, minus uh, minus it will be equal to this is your x minus 1 upon factorial 3 x cube and plus this is 1 upon 5 factorial 5 x power 5 and so on. So this is expansion of sin x and it will be divided by x cube as given. Okay, so what you get from here, this is limit x tending to 0. You can just have x plus 1 upon 3 x cube plus this is 2 upon 15 x power 5 and so on. And if you are expanding this is minus of x, this is this plus 1 upon factorial 3 of x cube and this is minus 1 upon factorial 5 of x power 5 and so on. So from here you can just simply x cube. तो आप देखिएगा this x will be cancelled with this minus of x and 1 by 3 minus plus 1 by factorial, that will be limit x tending to 0 1 by 3 यहाँ पर 1 by 3 आ जाएगा plus 1 upon factorial 3 मतलब 6 3 to the 6 so it will be 6 तो ये आ जाएगा x cube and plus you will get 2 upon 15 and minus 1 upon factorial 5. This is of x power 5 and so on. Okay. Divided by x cube. You can see this is limit x tending to 0. I am taking x cube outside. So what it remains 1 upon 3 plus 1 upon 6 plus this will be 2 upon 15 minus 1 upon factorial 5. I'm not going to calculate this thing because here the x square is remains. When you taking x power cube outside, so it will be remains. So I will, when we put the limit, it becomes 0. So I'm not going to calculate that calculation. So this is cancel out. And when you putting this x is equals to 0 here, you will remains only the first term, this one. So it will be 1 by 3 plus 1 upon 6. If you are taking the LCM, you will get 6 here and it will be 3 to the 6 and this is 1 and this will be 3 by 6 and that is equals to 1 by 2. So in any way you can calculate a limit but you will get the same limit and but here we are discussing about the method of L'Hospital. Okay, so we can use take the derivatives and usually we can able to calculate the such limit. Okay, so let's find the limits by using the L'Hospital rule from the exercises. Okay, तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर टू टाइप के इंडिटरमिनेट फॉर्म्स आपको दिखेंगे, एक तो 0/0, दूसरा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी. तो लेट अस सी कि वन बाय वन हमारे पास 16 नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं आपकी एक्सरसाइज में. तो आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम first. Okay, so now exercise exercises. The first problem is what they are asking about. Evaluate in each of the problem. Evaluate the following limits. They are asking about. तो आपको सारी लिमिट्स को कैलकुलेट करना है. ओके, so let's first problem. First problem is this. They are asking about the limit x tending to 0 and this is e to the power x minus 1 divided by x. Okay, when you're putting x is equals to 0 here, e to the power 0 means 1 and 1 minus 1 is 0 and upon 0. So it will be 0 upon 0 form. You can write in the front of this question, this is a 0/0 form and then you apply the L'Hospital rule. So this is limit x tending to 0, take the derivative of e to the power x, it remains e to the power x
and minus 1 is 0 and divided by 1. So you can just write by the hospital. You should mention this result, what you are using here. Okay. Now you put simply x power 0. So x power x equals to 0. The e power 0 is equals to 1. So limit of this is 1. This is your answer. Okay. Next, second number problem. In this, they are asking about the limit x tending to a log x minus a divided by, this is e की पावर x माइनस e की पावर a. आप सभी लोगों को सबसे पहले तो फार्मूले याद होने चाहिए, जो डेरिवेटिव्स के फार्मूले हैं, हर एक जो फंक्शंस हैं उनके फार्मूलाज का डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं, इवन दो आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो प्रीवियस जो फर्स्ट यूनिट में जो कवर करा है उसके अंदर भी डेरिवेटिव्स के फार्मूले हैं, तो आपको वो आने चाहिए ताकि इजिली आप कर सके। ओके, हियर यू कैन सी this log x minus a will be tending to infinity as x tending to a. Okay, and similarly this is log e to power x minus e to power a will be tending to infinity as x tending to a. And you also know the curve and the graph of such functions. अगर आप बेसिक फंक्शंस के कुछ ग्राफ्स पता है तो इजिली कोई ऑब्जर्व कि x टेंड कर रहा है, जब ये क्वांटिटी जीरो की तरफ जाती है, दिस होल थिंग विल बी टेंडिंग टू जीरो, देन log will be tending to infinity. We should know. Okay, so otherwise it's a zero, this is a infinity upon infinity form actually. So we know that for the infinity upon infinity, we can also take the derivatives. We can also apply the L'Hospital rule. Okay. So we have proved this. So this will be limit x tending to a. I am taking the derivative. Log का derivative क्या होता है? 1 upon x. So it will be 1 upon x minus a. Okay. यहाँ पर e to power a is a constant. Looks like a constant. So here also this is 1 upon e to power x minus e to power a. ये आ गया, और फिर e to power x minus e to power x फर्दर करेंगे तो it will be in the multiply, it will be e to power x. ओके, और ये कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, x माइनस 1 का करेंगे तो x इज 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिमेन्स रहा, यू कैन जस्ट से बाय डी हॉस्पिटल रूल, डी L'Hospital rule. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या रिमेन्स रहा, दिस इज सिंपली दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू a, और तुम्हारे पास ये ऊपर चला जाएगा तो यू कैन लुक्स लाइक दिस e की पावर x माइनस e की पावर a डिवाइडेड बाई दिस विल बी e की पावर x इनटू x माइनस a. ये रिमेन्स हो गया। You can see here also, when you're putting e to power a, you will get 0.04. This is the 0.04. So again we apply the L'Hospital rule. Okay, so you can again take the derivatives of the numerator and denominator separately. So I'm taking the derivative of numerator, it remains e to power x. This is divided by, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, e की पावर x इंटू x माइनस a. तो इट मीन e की पावर x, टेक द डेरिवेटिव ऑफ x माइनस a, it will be 1, and this is plus, this will be x minus a into derivative of e की पावर x, it will be remain e की पावर x. Okay, applying the L'Hospital rule. Okay, so what you get from here, simply you can see this is x tending to a, e to power x is, take the e power x common, it will be 1 plus x minus of a. Okay,
So from here you cancel it out and you will get remains limit x tending to a 1 upon 1 plus x minus a. When you're putting x is equals to a, it will be get you 1 upon 1, it equals to 1. So the limit of this function, it means limit of x tending to a, and this is log of x minus a divided by log of x e to power x e to power x minus e to power a is just equal to 1. This is your answer. Okay. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म मिलता है, 0.0 फॉर्म मिलता है, वी सिंपली टेक द डेरिवेटिव एंड अप्लाई द लिमिट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर थर्ड। Don't worry, I will discuss each and every problem from your textbook as well as some extra problem also. So your practice will be good. अगर आप सारी problems को practice कर लेते हैं, you will be mature enough in the subject and you can able to do the problems easily. Okay, so let's next तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। We are going to calculate the limit of x tending to 0, and here this is a to power x minus this is b to power x and divided by. So here you can see when you are putting the limit, the e to power 0 minus b to power 0 and divided by 0. So here we'll have 1 minus 1 divided by 0. You can simply this should be, this is 0 upon 0. तो इट इज 0.0 फॉर्म है ना। आप रख के देख लेना कि क्या आ रहा है। और दिस a and b should be non-zero. Okay, so then we can say this a to power 0 and b to power 0 is just equal to 1. So but in a problem they are not mentioned. We are assuming that a and b are non-zero, and in that why we are taking this is equal to 1. So this is 0.0 form. So now we can simply x tending to 0 and here take the derivative. So you know that what is the derivative of a to power x. You know that this is actually derivative of a to power x is just equal to a to power x to the base e log a. This is the derivative of a to power x. Okay. So here you can see that take the derivative. So when you're differentiating a to power x, it will be a to power x to the base e log a. Okay, minus this is b to power x to the base e log b and divided by x का derivative simply 1. So how you can just write by DL hospital. Okay, so from here you can just simply now you can apply the limit, because in denominator there is a finite number, so we can easily say what is the get 0 or some finite number. So when you are putting a x for 0, so you will have here this is a to power 0 to the base e log a and minus this is b to power 0 to the base e log b. Okay, and simply it is 1, so it will be to the base e log a minus to the base e log b, and from here you can write like this to the base e log a upon b, or simply you can say this is to the base this is log a upon b, or sometimes base e, you can add the like ln a upon b, because in a ln means we are taking the base e. Okay, so the answer is log a upon b. Okay, so this is your answer. So simply we are applying one time the hospital rule. Yeah, one time we are differentiating.
ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इन दिस इट इज limit, this is a polynomial type function, so we are very easy to solve this type of problem. X square plus 2x divided by, this is 5 minus 3x square. When you are applying this infinity, you will get this is infinity upon infinity form. So now simply you take the derivatives. You can have limit x tending to infinity. When you applying, this will be get 2x plus of 2 divided by, this is 5 का तो constant हो जाएगा, 3 to the 6, तो minus for 6x. Okay, again you get infinity upon infinity form. उसको यहाँ पर ये भी लिख दीजिए कि वी आर अप्लाइंग बाय द एल हॉस्पिटल, तो यहाँ पर आप यहाँ पर मेंशन करिए, प्रॉपर प्रॉब्लम किया जाता है, तो बाय द एल हॉस्पिटल, DL hospital. Okay, and it is again you can say this is infinity upon infinity. So again you can apply DL hospital rule. So this will be limit x tending to infinity. This will be remains 2 and there's the minus 6. So from here you will get minus 1 by 3. This is your answer. So by simply DL hospital. Okay, so this is your answer, minus 1 by 3. Next, this is the limit x tending to 0 and root of 1 minus 1 plus x minus का root of 1 minus x divided by x. Okay, so if you are taking the derivative, you can see अभी 0 put करते हैं, root 1 minus root 1 upon 0, it means 0 upon 0. So this is nothing, this is 0 upon 0. Okay, so you can take the derivatives of each. So this is limit x tending to 0, or this is 1 plus x power 1 by 2 actually. This is minus, this is your 1 minus x power 1 by 2 divided by, this is it. Okay, so let us take the derivative of the numerator and denominator. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि what is the derivative of 1 plus x power 1 by 2. क्या हो जाएगा, 1 by 2 आउटसाइड आ जाएगा, इट विल बी रिमेन्स 1 plus x power 1 by 2 minus 1. एंड 1 plus x का फर्दर करेंगे तो हमारे पास x 1 का तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो इट विल बी रिमेन्स लुक्स लाइक दिस. So it will be 1 plus x power minus 1 by 2. Yeah, you can say simply this is 1 upon 2 root of 1 plus x. Okay. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 1 by 2, तो व्हाट विल बी रिमेन, दिस इज 1 by 2 एंड 1 माइनस एक्स पावर 1 by 2 minus 1, है ना, ये होता है ना फॉर्मूला, डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इज इक्वल टू n एक्स पावर n minus 1. Sorry, this is what, this is equal to n x power n minus 1. सो इट विल बी इक्वल टू 1 by 2, और यहाँ पर हम इसका फर्दर डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो इट विल बी हैव 1 अपॉन रूट 1 minus x. Okay, and this is minus of 1, so from here you will get minus का 1 upon 2 times root of 1 minus x. So you will have here, this is they taking the derivative of this, you will get 1 upon 2 root 1 minus 1 plus x, और इसका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दिस इज 1 upon 2 root 1 minus x. ओके, एंड डिवाइडेड बाई x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो बाई एल हॉस्पिटल रूल.
बाई TL ओके। तो यहाँ पर हमारे पास x बराबर 0, व्हेन यू पुटिंग x इक्वल्स टू 0 हेयर, नाउ यू विल गेट द रिजल्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज 1/2 एंड दिस इज आल्सो 1/2, तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट 1। तो आंसर ऑफ दिस limit is just equal to 1. You can say this implies this is limit of x tending to 0, and this is root of 1 plus x minus root of 1 minus x is divided by x is just equal to 1. Okay. So we have completed 5 problems. Let's discuss about the next problem, 6th problem. Question number 6. So in this, they are asking about the limit of x tending to 0, and this is tan x minus x divided by x square tan x. Okay, if you are putting x equals to 0, you will get simply infinity upon infinity. So it will be infinity upon infinity form. Indeterminate form, infinity upon infinity, you can apply the DL hospital rule. Okay. So for applying DL hospital rule, we can take the derivative. So take the derivative of sec square tan x. तो tan का क्या होता है sec square x, और x का 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो दिस इज x स्क्वायर इंटू tan का हो जाएगा sec square x, एंड दिस इज प्लस tan x into 2 times x. Okay. If you are applying the limit again, you can say by DL hospital, हम इसको बार बार इसलिए लिख रहे हैं हर एक प्रॉब्लम में, क्योंकि हमने अगर लिख दिया, हम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वो लिखना है। when you are solving the problem in your examination or you by self, you should mention कि which method, which rule you are applying here if you are getting a indeterminate form. Okay. तो that's why I am writing, आपको ब्रैकेट में साइड में मेंशन करना है कि आपको हमने इस मेथड, इस मेथोलॉजी या इस टेक्निक की वजह से हमने लिखा है। तो हमने अगर डिफरेंशिएट करा है तो इसका मतलब हम डीएल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे हम लिमिट्स होते हैं जो हम इजिली बाई सम अदर सब्स्टिट्यूशन या अदर एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, जैसे हमने देखा था एग्जांपल के अंदर। बट वी आर नॉट अप्लाइंग सच थिंग्स, वी आर डायरेक्टली टेकिंग द डेरिवेटिव, सो वी विल हैव टू मेंशन देयर। ठीक है। तो आप डायरेक्टली नहीं करना है कि हम फटाफट कर रहे हैं क्वेश्चन, और शॉर्टकट नहीं करना, यू विल हैव टू राइट कि हम इस मेथड या टेक्निक को यूज कर। Okay, so here we are saying this is again 0.04. You can see when you are putting the x is equals to 0, sec square 0 is just equal to 1, 1 minus 1 is 0, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में टर्म्स 0 x अवेलेबल है, तो इसका मतलब 0.04 बन रहा है। अगेन टेक द डेरिवेटिव by again taking applying the L hospital rule. So take the derivative, it will be 2 sec x, sec x. If you take the derivative of sec x, it will be sec x into tan x. Okay. And now when taking the derivative, तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स में दो फंक्शंस हैं, तो दोनों टर्म्स में सेपरेटली प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक्स स्क्वायर, पहले टर्म की बात कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव दिस इज 2 ऑफ सेक एक्स, फिर सेक एक्स का हमारे पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये हो गया। फिर प्लस हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स रिमेन द सेम, फिर हम यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे, सेक स्क्वायर रिमेन द सेम, एंड एक्स स्क्वायर का तो इट विल बी 2x। तो ये आपका फर्स्ट टर्म का हमारे पास डिफरेंशिएशन कह सकते हो गया। फिर सेकेंड टर्म में जाएंगे तो tan x into taking the derivative of the 2x, it will be remain the 2, and this is plus 2x, and this derivative of tan x, it will be sec square,
Okay, so it looks like some complex derivative. Okay, but don't worry, the result will be comes after and then. तो यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि अभी भी हमारे पास, अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, इट विल बी टू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू टेन एक्स. ओके, ओके, ओके. एंड नेक्स्ट, what you get from here, this will be x square into 2 times, you can say this is our sec square of x into tan x. Okay, and plus this will be 2x of sec square of x, ये आपका हो गया. एंड प्लस का दिस इज 2 of tan x, and this is plus of 2 times of x into sec square. ओके. अब अभी हम अगर देखें, अगर हम यहाँ पर अभी तो हमने एक टाइम्स अगेन हमने डीएल हॉस्पिटल रूल लगाया, टेक द डेरिवेटिव, हमने डेरिवेटिव लिया. और जब हमें x बराबर 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो यू विल गेट अगेन 0.0. You can see easily tan 0 is 0, and here in each term there are x and x, and tan 0 is 0, and तो डिन्यूमरेटर भी 0 दे रहा है और हमारा न्यूमरेटर भी 0 दे रहा है. तो एक बार फिर से हम डेरिवेटिव्स करते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपकी प्रॉब्लम टिपिकल हो गई, मतलब थोड़ा सा आपका लेंथी हो गया प्रोसेस, बट बी यू विल हैव टू डिफरेंशिएट शार्पली. आपको ध्यान देके प्रॉपर तरीके से करना है, वरना एक भी टर्म आपका गलत हो गया तो हो सकता है आंसर आपका mismatch हो जाए. So I'm just differentiating first the numerator. So you can just taking 2 outside, and what you get from here, this is first function and second function. So this is sec square x remain the same. Taking the derivative of tan x, it will be sec square x again, and plus if you are taking the tan x, it remains same, and taking the derivative of sec square x, it will be 2 sec x first, and then sec क्या हो जाएगा, sec x into tan x. Okay, so this is the derivative of numerator, and now we will take the derivative of denominator by using the product rule of the two functions one by one. So first we are going to take the derivative of this first term. So we have this is 2 outside, and simply we know that if there are 3 functions, then we have putting 2 without derivative and one taking the one derivative at a time. So we have this going to, this is your taking the derivative of x square. So it will be 2x, and we are putting this is sec square x into tan x. Same. Okay. Now I am taking the derivative of sec square x. So it will be remains x square, and this will be 2 of sec x into sec x into tan x. This is derivative of sec square x, and tan x is remain the same. Okay, now differentiating the tan x only. So this will be x square, and this is sec square x, and this is will be sec square x. This is derivative of tan x. So this is the derivative of the first term only. Okay, I am going to take the derivative of the second term. So it will be 2, and taking the bracket x, taking the derivative of x is 1, and will be it is just sec square x, and plus I'm taking the derivative of sec square x. So x will be remain the same, and it will be 2 sec x into sec x into tan. The derivative of the sec x is sec x into tan x. Okay, so this is the derivative of the second term. Now derivative of the third term, it will be 2 sec square of x. Okay, and now the derivative of the fourth term. Okay, so the taking 2 outside, and because this term and this term are the same term. Okay, and this is 2 and 2, so we are going to nothing to do with it. हम इसको तो कुछ नहीं वाले हैं. हम यहाँ पे सिंपली ओके, हम यहाँ पर 4 कर देने वाले. ये 2 है, 2 2 जब 4 दोनों को ऐड कर दिया और हमने डेरिवेटिव लिख दिया. ओके, नाउ पुट द वैल्यू. ठीक है, तो अब हमारे पास इस एक्सप्रेशन यहाँ पर हमने जो लिखा है, दिस इज बाय डी एल हॉस्पिटल, वी मेंशन दिस,
रूल। ओके, तो अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं अगर लिमिट। नाउ वी कैन अप्लाई द लिमिट। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वी कैन सी कि दिस टर्म विल बी 10 जीरो विल बी जीरो, तो ये हमारा टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। इसमें x मौजूद है तो ये वाला टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, और ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, और ये टर्म भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये टर्म्स हमारे जीरो हो रहे हैं। साथ में हमारे पास ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। ओके, तो व्हाट इज रिमेनिंग नॉन जीरो टर्म्स। यहाँ पर हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हेयर विल बी दिस इज 2, और sec स्क्वायर जीरो मीन्स 1, so it will be 1 here. Okay, and this term is 0, so there's nothing to do. Divided by, here this is 2, and यहाँ पर 0 मिलता है इस टर्म में, एंड प्लस का 4। यहाँ पर हमारे पास sec स्क्वायर जीरो, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 मिलेगा और सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। प्लस का 2 टाइम्स into 1। Okay, so from here you will get this is 2 upon this is 4 plus 2, so it will be equal to 2 upon 6, it will be equal to 1 by 3। so this is the value of the limit of this फंक्शन। ये तो बहुत सिंपल दिख रहा था, बट इस लिमिट जब हम कैलकुलेट करने गए बाय यूजिंग द टेक द डेरिवेटिव अगेन 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 3 टाइम्स, हमको डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ रहा है टू बी गेट द रिजल्ट। ओके, so it means the value, this means the value of this limit x tending to 0 of this is tan x minus x divided by x square tan into x is just equal to 1 by 3। So this is your answer. Let us check the answer as to, yes, its the answer is 1 by 3। इसके प्रीवियस में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, का जो रिजल्ट आ रहा था वो जीरो आ रहा था। लेट अस सी, जीरो लिमिट इज 1। 5 में आंसर जीरो दिया हुआ है, कैसे जीरो कैसे हो जाएगा? आंसर गलत दिए हैं क्या ये लोग? एक बार अभी हम चेक कर लेंगे, फिफ्थ वाले को फिर से देख लेंगे। इवन दो हमारे कॉन्सेप्ट सही है, इट मे बी इन टेक्स्ट बुक देयर मिस प्रिंटिंग। ओके, इट्स ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, this is the simple limit x tending to a, and this is a to power x and minus x power a divided by this is x power x minus this is a to power. When you're putting x is equals to a, you will get a to power a to power a minus a power, मतलब it means you simply get 0.04। यहाँ पर थोड़ा सा लिमिट्स को जब आप एक डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो आपको ध्यान देना है। इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द डेरिवेटिव, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ a to power x, so you simply know the formula, a to power x is just equal to the base a। This is the derivative of a to power x। what is the derivative of x की power a? Simply this is a x power n type का formula है, because a is some constant, so you can have this is your a into x की power a minus 1। when you are going to take the derivative of x power x, तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट सिंपली हम इसे याद करके रखते हैं। कैसे? इफ यू आर टेकिंग y इज इक्वल टू x की पावर x, ओके, you can have taking the log on both side, taking log on both side। तो हम जब log ले लेंगे तो you will have log y is just equal to log of x power, and now you can just simplify, this is x into to the base log x power x, sorry x, है ना? अगर पावर में कुछ होता है लॉग में तो वो हमारे पास बाहर आ जाता है। वी हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम।
तो यहाँ पर हमारे पास जो है log y एंड दैट्स इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ x। तो अब इसको हम डेरिवेटिव लेंगे, तो सिंपली 1/y एंड दिस इज dy dx जस्ट इक्वल टू x log x। तो x इंटू लॉग x का 1/x एंड प्लस दिस इज x का डेरिवेटिव 1, तो ये सिंपली log x रिमेन्स बचेगा। तो फ्रॉम हियर you will get 1 plus log, okay, and you can have this implies this is dy dx is nothing, this is equals to y into 1 plus log, okay, and from here you can have x power x into 1 plus log of x, okay. So it means that the derivative of x power x is just equal to x power x into 1 plus log, and बाकी a की power a is a constant, so we can because it is a 0.0 form, so we can apply the DL hospital rule. It means we take the derivative. But first we should know what is the derivative of x की power x. So it will be simply equal to x power x and 1 plus log 1 plus log x, the derivative of this x power x. Okay. So I'm going to take the derivative by applying the L'Hospital rule. So it will be limit x tending to a. And derivative of a की power x is simply, you know that a की power x to the base e log a. And minus x power a, it will be a x power a minus 1. Okay. Divided by x power x, अभी हमने देखा x power x into 1 plus log x. This is derivative of x power x, and a power a is a constant, तो इसका डेरिवेटिव सिंपली 0 हो जाएगा, okay. So what is remains here, so you can say by DL hospital, नाम है ना, तो इसको साथ में लिखो, दिस इज DL हॉस्पिटल, ओके। यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो लेट अस सी व्हाट वी विल गेट। तो यहाँ पर टू द बेस e log a minus 1 है, तो now I think we can apply the limit here because we are not going to get 0, we will get something because ऊपर निगेटिव है और यहाँ पर हमारे पास ऊपर माइनस है और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो we will simply apply the limit here, okay. तो लेट्स अप्लाई, तो वह यहाँ पर जब लिमिट लिमिट अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट a द पावर a, ओके, टू द बेस e log a, ओके, माइनस दिस इज a into a द पावर a minus 1 डिवाइडेड बाई दिस इज a द पावर a और 1 प्लस टू द बेस e log a, यहाँ पर बेस e है माइनस 0। सो यू कैन सी कि ए डी पावर यहाँ पर एक ए इंटू एक पावर ए माइनस 1, इट मीन ए डी पावर ए, यहाँ पर ए डी पावर ए तुम कॉमन ले सकते हो, तो ऊपर बचेगा दिस इज टू द बेस ई लॉग ए माइनस 1 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई ए डी पावर ए इंटू 1 प्लस लॉग ए, इससे आप कैंसिल कर दीजिए और सिमिलैरिटी देखने के लिए यू कैन जस्ट लुक्स लाइक दिस ए माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा टू द बेस ई लॉग ए प्लस, या सिंपली आप ई नहीं लिखना चाहते हो तो लॉग ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई लॉग ए प्लस, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इसमें एक ही बार हमको एल हॉस्पिटल रूल लगाना था, बट वी शुड नो द डेरिवेटिव, प्रॉपर मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव सेकंड का, तो लॉग ए माइनस 1 अपॉन लॉग ए प्लस 1, ओके, तो दिस इज योर आंसर, ओके। तो आई होप सो कि समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे हमने एल हॉस्पिटल रूल का यूज करा है अपनी लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो अभी शायद करा है या नहीं, वो दूसरा था, ठीक।
Question number 8. This is your limit x tending to 0. This is x minus sine of x divided by x cube. ओके, तो आइए इसमें अगर हम जीरो रखते हैं तो इट इज अगेन 0.0 फॉर्म. We can also again apply the L'Hospital rule. It will be limit x tending to 0. x का तो 1 हो जाएगा. cos sin का होता है cos, तो this is cos x divided by 3x square by L'Hospital rule. Okay, again you know that this is again 0.0 form. Again 0.0 form. You can again apply the same rule. Again take the derivative, limit x tending to 0. 1 का तो 0 हो गया. cos का साइन होता है माइनस का साइन, तो वे हो जाएगा प्लस का साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय 6 to the 6 of x. Okay. Again 0.0 form. So we can apply the limit. So this is limit x tending to 0, and this is again sin the cos of x divided by 6. Now you can apply the limit. You will get this is 1 upon 6. So this is the answer is 1 upon 6. Question number 8, we get the answer is 1 by 6. Okay. Next problem की तरफ बढ़ते हैं. That is question number 9. That is your limit x tending to pi by 4. Pi by 4. It will be sec square of x minus the 2 tan of x divided by 1 plus cos 4x. You know that when you are putting x is equals to pi by 4, so sec pi by 4 means it is root 2. sec pi by 4 की वैल्यू रूट 2 होती है, उसका स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा. और यहाँ पर tan pi by 4 मतलब 1. इट मीन 2 माइनस 2. न्यूमरेटर में क्या आ गया 0. डिन्यूमरेटर में हमारे पास 1 प्लस कॉस 4x. 4x का मतलब है कि when you putting x is equals to pi by 4, then 4x is equal to pi. It means cos pi. Cos pi की वैल्यू -1 होती है, तो 1 minus 1 will be equal to 0. So it is again 0.04. So we can apply the L'Hospital rule here. Limit x tending to pi by 4. Taking the derivative of sec square x, it will be 2 sec of x into sec x into tan x, and minus का 2 tan का होता है sec square x. So it will be sec square x divided by 1 का डेरिवेटिव 0, एंड cos का हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का साइन ऑफ 4x, और 4x था इसलिए 4 भी आ जाएगा. ओके. नाउ यू नो दैट कि इज इट क्लियर कि तुम्हारे पास यहाँ पर cos tan pi by 4 की वैल्यू 1 होती है, और sec स्क्वायर यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें, यू कैन जस्ट आई से बाई दी L'Hospital by the L'Hospital rule. Okay, so the limit x tending to pi by 4. तो यहाँ पर हमारे पास इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखे थोड़ा 2 sec स्क्वायर एक्स हम कॉमन ले लेंगे. sec स्क्वायर है तो अंदर बचेगा तुम्हारे पास tan x माइनस का 1. ओके, एंड डिवाइडेड बाई दिस इज 4 minus का 4 you can say this is sin of 4x. Okay, so because we are putting x is equals to pi by 4, so the sin pi is equals to 0 and upper side also 0, so this is again 0.04. So we can again apply the L'Hospital rule. So this will be limit x tending to pi by 4, और इसका डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग सिंपली. तो डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का रूल लगाएंगे. फर्स्ट फंक्शन sec स्क्वायर एक्स
simply remain the same. Derivative of tan x, तो because tan x का होता है sec square of x और 1 का तो 0 हो जाएगा, तो there is nothing to do, plus 1. Now it's remain tan x minus 1 and derivative of sec square x, it will be 2 sec x into sec x into tan x. Okay, this one divided by सिंपली माइनस ऑफ 4, और साइन का होता है कॉस एंड 4x का 4 बाहर आ जाएगा, तो दिस 4 एंड दिस इज कॉस ऑफ 4. ओके, सो नाउ यू कैन जस्ट अप्लाई द लिमिट. तो अब हमारे पास बिकॉज ये टर्म तो हमारा जीरो हो जाएगा व्हेन यू पुटिंग द लिमिट x इक्वल्स टू पाई बाय 4, बट दिस टर्म विल बी इक्वल टू रूट 2. रूट 2 का होल स्क्वायर मतलब 2 और 2. अब उसको लिख लेते हैं, दिस इज 2 सिंपली 6 की पावर 4 एंड 5/4, ये हमारे पास बचेगा. और दूसरा टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि टेन टेन 5/4 मतलब 1, 1 माइनस 1 इज जीरो, तो दूसरा टर्म तो हमारा जीरो हो गया. यहाँ पर हमारे पास बचेगा, दिस इज 4 × 16 माइनस ऑफ 16, और कॉस पाई बचेगा. कॉस पाई का मतलब होता है माइनस का 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा रूट 2. सेक, क्योंकि cos π/4 1/√2 होता है, तो sec π/4 इज √2, तो √2 की पावर हो जाएगी 4. 4 का मतलब है 2 टू जा 4, तो ये माइनस का 16 और इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 1, तो ये 2 हो जाएगा. और ये √2 की पावर 4 मतलब और √2 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, विल गेट 4 है. तो here you will have 16 प्लस का हो जाएगा. It means this is 8/16. It will equals to 1/2. So this is your answer of this limit. Okay. So it means the limit of the ninth one. So this is limit. It means limit implies limit x tending to π/4 of this is sec square x minus the 2 tan x divided by 1 plus cos 4x is just equal to 1/2. This is the, so this is question number 9. 1/2. Okay, okay, that's good. Next question number 10. Question number 10 solve कर लेते हैं. तो question number 10 is what? This is limit x tending to 0, and this is our sine of 2x plus this is 2 of sine square x and minus का 2 sin x divided by cos x माइनस का cos स्क्वायर आते हैं. तो यहाँ पर जब x बराबर 0 पुट करोगे तो यू कैन सी कि जो न्यूमरेटर है वो भी 0 आ रहा है, डिन्यूमरेटर है क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 minus 1 it will be again 0. So this is 0 for 0 form simply. So you can apply the DL hospital rule, take the derivative x tending to 0. तो डेरिवेटिव ऑफ sin 2x का क्या हो जाएगा? cos 2x into 2, तो cos 2x का 2 बाहर आएगा, प्लस 2 टू जब 4 ऑफ sin x हो जाएगा, और sin x का फिर से फर्दर cos x, एंड दिस इज माइनस ऑफ 2 cos x, cos sin का डेरिवेटिव cos x डिवाइडेड बाई cos x का डेरिवेटिव sin x, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2 cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, माइनस ऑफ साइन, और इसका भी माइनस का साइन एक्स हो जाएगा. cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर 2 cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स. तो यू कैन से बाई द हॉस्पिटल रूल. ओके, तो नेक्स्ट थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. लेट्स सिंप्लीफाई. तो इट विल बी लिमिट x टेंडिंग टू 0. This is 2 of cos 2x
ओके, एंड यू कैन से 2 हमने इसके साथ एडजस्ट कर दिया, तो यू विल हैव साइन 2x, कॉस साइन 2x लिख सकते हैं, है ना। टू टू साइन एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, तो हम यहाँ पर 4 था तो हमने 2 इसके साथ एडजस्ट कर दिया, एंड यहाँ माइनस का 2 ऑफ कॉस एक्स। ओके, डिवाइडेड बाई this is minus of sin x, okay, that is okay, minus minus plus, और 2 sin x cos x मतलब sin 2x। तो अभी हम देखिए, अगर हम पर x बराबर 0 पुट करते हैं तो cos 2x का मतलब cos 0, एटा मतलब 2, फिर sin 0 का मतलब 0, और cos 0 का मतलब 1, तो दिस 2 माइनस 2 इज 0, एंड तो इसका मतलब है न्यूमरेटर में 0 आ गया, डिनोमिनेटर में भी 0 आ जाएगा, दिस इज 0 अपॉन 0 फॉर्म अगेन। So again apply the DL hospital rule and take the derivative simply. So this will be limit x tending to 0 2, or it will be minus of sin 2x, and derivative of 2x will be 2, okay, plus this is 2, and sin का होता है cos of 2x, cos होता है 2x का again 2, माइनस का 2 और माइनस का sin x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin। ओके, व्हाट विल गेट फ्रॉम हियर, तो sin का डेरिवेटिव cos x, तो माइनस का cos x, ओके, प्लस यहाँ पर हो जाएगा cos 2x इंटू 2, cos 2x इंटू 2। ओके, सो नाउ वी कैन अप्लाई, ये जो हमने रिजल्ट लिखा है तो हमने डीएल हॉस्पिटल रूल से लिखा। ओके, तो व्हेन यू पुटिंग हेयर, अब हम अगर x बराबर 0 पुट करते हैं तो वी कैन सी, तो फर्स्ट टर्म में वो 0 हो जाएगा, साइन वाले साइड टर्म में ये 0 हो जाएगा, बट ये हमारे पास नॉन जीरो रहेगा, और cos 0 का वैल्यू 1, इट मीन 2 टू जा 4 इज रिमेनिंग हियर। यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, cos 0 1 इज -1, और ये हमारे पास हो जाएगा cos 0 मतलब 1 इज -1 प्लस 2। तो यहाँ पर जो हमारा टर्म आएगा, फर्स्ट टर्म 0 हो गया, प्लस 2 टू जा 4 सेकेंड टर्म हो गया, ये भी 0 टर्म हो जाएगा प्लस का, and this is divided by, this is minus का 1 and this is plus का 2, so you will have remaining 4 upon 1, it means 4। तो ये जो लिमिट है इस फंक्शन की, वो हमारे पास क्या आ रहा है, 4। लिमिट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10 is equal to 4, yeah, its answer is 4। uh, let's move for the next problem, question number 11। 11 में क्या है, दिस इज लिमिट, सिंपली लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, एंड प्लस का दिस इज 2 log ऑफ 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इंटू साइन x। सो यहाँ पर e की पावर 0 मतलब 1 इक्वल माइनस x, ये भी 0, ये 1 माइनस 1 0, और व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो न्यूमरेटर में 0 आ गया, डिनोमिनेटर में भी 0 आएगा, दिस इज एक्चुअली 0 अपॉन 0 फॉर्म। So simply take the derivative of it. This is limit x tending to 0, and e power x का डेरिवेटिव e power x, e power माइनस x का डेरिवेटिव हो जाएगा e power माइनस x इंटू माइनस x का -1, तो इट विल बी प्लस e की पावर माइनस x, ओके, प्लस दिस इज 2 टाइम्स 1 अपॉन 1 प्लस x, तो दिस इज द डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव करते हैं तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर, साइन का हो जाएगा cos ऑफ x, एंड प्लस दिस विल बी 2x इंटू साइन। तो यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं, तो 0 अगर हम पुट करते हैं तो दिस 1 प्लस 1, और यहाँ पर दिस इज 2 बिकॉज 2/2, तो दिस 1 प्लस 4 आ जाएगा, बट डिन्यूमरेटर में 0 रहेगा।
you can say by the hospital rule. ओके, यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इट विल बी गेट द इंफिनिटी बिकॉज इन न्यूमरेटर it will be equal to what in numerator it will be get 1 plus 1 and plus this is 2 upon 1 but 2 upon 1 simply, so it will be 2, but here you will get 0 and here you get 0, so it's something 4 upon 0 type. Not it means when x is tending to 0 this will be tending to 0 and this will be tending to 4, so it will be 4 upon 0 type, it means it is infinity. So it simply will in the 11th it will be get a infinity. 11 is -1 upon -1 upon 3 they are saying. So here I think 11th number problem that the answer will be infinity because अगर यहाँ पर हम रखते हैं 0 when take the derivative is the 0 upon 0 form, डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2 और log का 1 upon 1 plus x simply log का डेरिवेटिव होता है 1 upon x, तो simply we have yes प्रोडक्ट में तो दिया नहीं है ओके, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा दैट विल बी इक्वल टू इंफिनिटी. In your textbook I will verify these questions again, but in your I think answers is wrong because here the no mentioning is 1 upon या फिर misprinting हो, क्वेश्चन का misprinting होना भी कभी कभी होता है, but this is the answer is correct, so this infinity is correct. Okay, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर question number 12. So this is the limit x tending to 0 and this is log of 1 minus x square and divided by this is log of cos x. ओके, तो यहाँ पर अगर हम x बराबर 0 रखते हैं cos 0 का मतलब 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पर अगर 0 रखते हैं तो log 1 की 0, तो सिंपली दिस इज 0.04, तो वी कैन सिंपली अप्लाई द डीएल हॉस्पिटल रूल. तो हम इसको टेक द डेरिवेटिव दिस लिमिट x टेंडिंग टू 0, उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो इट विल बी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फर्दर करेंगे बाय द चेन रूल, तो इट विल बी माइनस ऑफ 2x एंड यहाँ पर जब हम करेंगे तो 1 अपॉन cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन. तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट व्हाट लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, साइन अपॉन कॉस tan होता है. तो फ्रॉम हेयर यू विल हैव x 2x actually, this is 2x upon 1 minus x square into tan x. ओके, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आएगा और वी कैन कैसे हमने डेरिवेटिव बाय डी एल हॉस्पिटल. ओके, सो अगेन हम टेक अ डेरिवेटिव ऑफ इट, हम फिर से डेरिवेटिव ले लेते हैं. तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 बिकॉज इट इज अगेन 0.0 फॉर्म है ना, tan 0 मतलब 0 और यहाँ पर 0, तो अगेन डेरिवेटिव तो ऊपर आ गया 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट फंक्शन सेकंड वन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ एक्स एंड प्लस दिस इज tan ऑफ एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस ऑफ 2x. तो नाउ यू कैन अप्लाई द लिमिट. अब हम रखेंगे तो ऊपर तो 2 ही रहेगा, नीचे हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 1 हो गया और सेक स्क्वायर 0 का वैल्यू थी 1 ही एंड प्लस 0, तो यू विल हैव 2 लिमिट ऑफ दिस टर्म. तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है आंसर है वो हमारे पास 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13. क्वेश्चन नंबर 13 की बात है.
13 में है लिमिट, वी आर आस्किंग फॉर लिमिट x टेंडिंग टू 0 and this is 1 minus root of 1 minus x square divided by x square. ओके, तो यहाँ पर भी ये 0.0 फॉर्म बन रहा है, तो we simply take the derivative. तो 1 का तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 1/2 एंड दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 एंड फिर हमारे पास माइनस का 2x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फर्दर करेंगे हम लोग ना, तो इट विल बी 2x. तो यहाँ से 2x कैंसिल, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी रिमेन्स व्हाट, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड minus plus this is 1 upon 2 root 1 minus x square. Now you can apply the limit, so you simply get this is 1 upon root 1, 1 upon 2 root 1, it means 1 upon 2. So limit of this function is 1/2. So question number 13 का जो आंसर है that is your 1/2. Answer is 1/2. Okay. 14 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी e to power x divided by x cube. Okay, so e to power when x tending to infinity, e power x will be tending to infinity and x cube will be tending to infinity, so this is simply infinity upon infinity form. So we can apply the L'Hospital rule, take the derivative, so you can have this is limit x tending to infinity e to power x, taking the derivative of 3x square, e power x का e power x ही रहता है 3x square, फर्दर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो फिर से हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो इट विल बी e की पावर x अपॉन दिस इज 6 ऑफ x, फर्दर ए इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन इट इज e की पावर x अपॉन 6. ओके, अभी हमारे पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नहीं, इट विल बी न्यूमरेटर विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड डिन्यूमरेटर इज सम फाइनाइट वैल्यू, तो इन्फिनिटी का फाइनाइट से प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन इनफाइनाइट ही आता है, तो दिस विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट. सो बाय यू कैन से बाय डीएल हॉस्पिटल. तो यहाँ पर इसकी जो लिमिट है दैट विल बी इनफाइनाइट, लिमिट विल बी इनफाइनाइट. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50. So this is limit x tending to 0 log of sine 2x divided by this is log of sine x. ध्यान दीजिएगा, when this x is tending to 0, when this x is tending to 0, then sine 2x will be tending to 0 and cos sine 2x is also tending to 0 and sine x will be tending to 0, and when log will be tending to infinity. So this is nothing, this is infinity upon infinity form. So we can apply the limit. We can apply the L'Hospital rule. Sorry, not infinity, 0. Okay, तो log का होता है 1 upon sin 2x, फिर sin का फर्दर करेंगे तो it will be cos 2x, और फिर cos का फर्दर 2x का फर्दर करेंगे you will get 2 here. यहाँ पर क्या आ जाएगा, this will be 1 upon sin x into cos x, we will remain like this. Okay, so pi d equal. Okay, next what you got from here, you simply have this is limit x tending to 0, this is cos, so it will be cot 2x. Okay, this is 2 times cot 2x divided by this is cot x.
Yeah, you can say looks like this. This is limit x tending to 0, and this is the to remain the same 2. This is tan x divided by tan 2x. ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और tan को लेकर फार्मूला हमें पता है कि लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x इज जस्ट इक्वल टू 1। इसकी लिमिट होती है, जैसे साइन का होता है वैसे ही tan के लिए भी हम लिख सकते हैं। सो हम वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस लिमिट, इवन दो अगर हमें सपोज दैट कि हमें वो भी लगाना है, सिंपली यहाँ पर हम देख रहे हैं दिस इज अगेन 0.04, दिस इज 0.04, दिस इज 0.04। ओके, तो वी कैन अप्लाई सच लिमिट्स। ओके, लिमिट इज एक्स, यहाँ पर इंफिनिटी फॉर्म दिख रहा था या 0.0 फॉर्म दिख रहा था, हमें यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। तो दिस इज 2 sec स्क्वायर ऑफ एक्स divided by this is what, this is sec square of 2x into 2। okay, तो नाउ यू कैन अप्लाई द लिमिट। अब हम आसानी से हम इस लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम अगर लिमिट को अप्लाई करते हैं तो एक बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एंड डिनोमिनेटर में भी 2 बिकॉज sec 0 is 1, so this is 2 upon 2, it means 1। so this is your answer। so this is all problems from your exercise where we get the limits of the infinity upon infinity form or 0 upon 0 form। तो कैसे करते हैं, कैसे हम डेरिवेटिव्स को लिखते हैं, इजीली वी कैन एबल टू डू। ओके, तो आप प्रैक्टिस करिए प्रॉब्लम्स की, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा उसको कराने में। अभी आई थिंक लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया बिकॉज मुझे सारे प्रॉब्लम्स करने थे। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी और आप सारे प्रॉब्लम्स को ट्राई करेंगे। दो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कुछ आंसर्स मिसमैच कर रहे थे फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, तो हम उनको भी वेरीफाई कर लेंगे। इवन दो मेरी मेथोलॉजी सही है तो आंसर सही है, मोस्ट प्रोबेबली आंसर इज करेक्ट। तो देखना पड़ेगा कि मिस प्रिंटिंग कहाँ पे है। क्वेश्चन के आंसर में मिस प्रिंटिंग है, क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, या हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रही हो। तो उस सारी चीजों को वेरीफाई कर लेंगे, आप लोग भी वेरीफाई कर लीजिएगा उन प्रॉब्लम्स को। मेरे एंड से वो करेक्ट है एंड मेरे नॉलेज बेस पे वो करेक्ट आंसर है, बट इट मे बी somehow वी कैन। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारा जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच करे। समटाइम्स मिसप्रिंट होता है क्वेश्चन, समटाइम्स आंसर्स मिसप्रिंट होते हैं। तो बट अपने कॉन्सेप्ट पे हमें कॉन्फिडेंट रहना है। आप जब कर रहे हैं, जब चीजों को कर रहे हैं, वो प्रोसेस, वो मेथोलॉजी हमें सही लग रही कि नहीं लग रही, वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है, एंड व्हाट वी गेट दैट इज आवर आंसर। ओके, तो we will meet in the next lecture with the problem number 16, और उसको हम साथ में उसे रिकॉर्ड कर देंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। ओके, और उसके ऊपर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, we will meet in the next lecture। keep watching and keep sharing videos to other students। thank you so much।